परिणीति शिंदे जी। महोदय, मुझे अपनी इस ऐतिहासिक दिन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और संत रोहिदास जैसे अनेक संतों ने समाज को प्रेम और सद्भावना दी। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और शाहू महाराज जैसे शूरवीरों ने अपनी दूरदृष्टि से सामाजिक एकता और न्याय संगत समाज प्रणाली की स्थापना की। मैं उस महाराष्ट्र की पुत्री हूँ जहाँ महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु अनेक आंदोलन द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने समाज को एक नई दिशा दी। मैं उस महाराष्ट्र की बेटी हूँ जहाँ के महान सुपुत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान के रूप में एक सशक्त और न्याय संगत लोकतांत्रिक मूलाधार प्रदान किया। पर आज उसी महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकार के शपथ विधि के बिल्कुल 5 दिन बाद उसी संविधान की प्रत की विटंबना की जाती है। मैं इस बात का निषेध करती हूँ। परभणी जिले में संविधान के प्रत की विटंबना की गई। संविधान के हीरक महोत्सव के उपलक्ष्य में जब मेरे विचार रखने का मौका मुझे मिला तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि संविधान सिर्फ एक किताब या नियमों की एक संगति सूची नहीं है, बल्कि मेरी जान है संविधान, मेरी पहचान है संविधान और इस देश की आत्मा है संविधान। दूसरी तरफ आज़ादी के 50 साल बाद तक अपने तिरंगे को और संविधान को न मानने वाले सत्ता पक्ष के लोग इस देश की उसी आत्मा को कमजोर और खोखला करने की साजिश कर रहे हैं। इसी शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जो संविधान का एक मूलभूत आधार स्तंभ है, उसी को लेके गाली या एक कलंक में रूपांतरित करने का प्रयत्न सत्ताधारियों द्वारा होने लगा है। सेक्युलरिज्म को आज भी इस भारत देश की पहचान है, उसे सत्ताधारी पक्ष एक कमजोरी कर रहे हैं या एक बीमारी साबित करने की होड़ में लग गए हैं। संविधान की किसी भी चर्चा या बहस को ये लोग सिर्फ इमरजेंसी पर ले जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, हमारी पहली महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त के हालातों के मद्देनजर वो संवैधानिक कदम उठाए थे और उस दौरान हुए गलतियों की माफ़ी भी देश के जनता से मांगी थी। और इतना ही नहीं, उनके विरोधियों ने गठित की गई कमेटी ने उन पर लगे सारे इल्ज़ामों से उन्हें बारी कर दिया था। मैं आज इस सदन में पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से, सॉरी 400 पार का नारा फेल होने के बाद एनडीए सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप मणिपुर पर देश की जनता से माफी कब मांगोगे? आप किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों के परिवारों की माफी कब मांगोगे? नोटबंदी के चलते हजारों लोगों के परिवार और छोटे कारोबार बंद हुए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? हाथरस के लिए, उन्नाव के लिए आप माफी कब मांगोगे? आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए माफी कब मांगोगे? जो बदलापुर में मासूम बच्चों के ऊपर मोलेस्टेशन हुआ, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? जेल में बैठकर अपराधी मर्डर प्लॉट्स गुजरात में सरकार उनको संरक्षण दे रही है, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? खैर, ये इनकी हिस्ट्री रही है या इनके डीएनए में है कि माफी सिर्फ खुद को बचाने के लिए अथॉरिटी में बैठे लोगों से मांगते हैं, आम जनता से ये माफी नहीं मांगते हैं। सत्ताधारी पक्ष के संविधान पर दिए गए भाषण सुनकर हंसी आ रही थी और अचरज भी हो रहा था, क्योंकि जो लोग इस देश में संविधान स्थापित होने के बाद हर पल संविधान को कोसते रहते हैं और हमेशा इस संविधान के विरोधी रहे हैं, उन्हीं को आज संविधान के गुणगान करते देख मन में प्रसन्नता हो रही है और संविधान के प्रति मेरी निष्ठा द्विगुणित हो रही है, क्योंकि ये एहसास हो रहा था कितने ही झूठ के पहाड़ बना लो, सच के आगे आखिर झुकना ही पड़ता है। आरएसएस ने तिरंगा को माना नहीं था। उन्होंने कहा था कि 3 अंक अशुभ होता है, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अशुभ है? जो हम 3 रेखाएं माथे पे लिखते हैं वो अशुभ है? क्या त्रिशूल अशुभ है? ये मैं इन्हें पूछना चाहती हूँ। वर्ष 1993 में आरएसएस ने अपने श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर करार दिया था। क्या ये तिरंगे के खिलाफ नहीं है? तत्कालीन आरएसएस प्रमुख ने उस टाइम संविधान को बदलने की मांग की थी। धन्यवाद। आरएसएस महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमजोर समझती है। आरएसएस हमेशा महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझती है। ये अफसोस होता है
कि प्रधानमंत्री जी उनके ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं जो महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं। इस बात का अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये करते हैं। जनवरी 26, 2001 में इन्होंने तिरंगा माना और इतने सालों बाद तिरंगे को नागपुर में होस्ट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इन्हें एहसास हुआ कि संविधान को ज्यादा छेड़ेंगे तो सत्ता हाथ से निकल सकती है, इसीलिए अचानक संविधान के प्रति इनको प्यार उमड़ने लगा। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी ने, मैं उनका सम्मान करती हूँ, बयान में जाने अनजाने आजादी के बाद से लेकर 2014 तक सारी कांग्रेस सरकारों को ऐसे सर्टिफिकेट दे दिया जिसे कोई झुठला नहीं सकता। उनके मुताबिक संविधान की बदौलत एक गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसकी नींव सर 2 मिनट सर प्लीज, मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ। मैं भारत का, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। अध्यक्ष महोदय, हिंदी की एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियों से। एक सेकंड, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल ठहरी कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है? मैं डॉक्टर जावेद, आपने नाम लिया, मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूं और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अंबेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज हम अपने आप को महसूस समझते हैं, महफूज समझते हैं। लेकिन जो ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण उस पे अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। और सर वही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 686 हेट स्पीचेस हुए। आपको जान के ताजुब होगा सर। किसको लात मारा आप बताएं, तथ्य दीजिए, किसको कहा लात मारा, तथ्य दीजिए। हम देंगे सर। नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ने देखा, ताजुब है आप छुप गए देखने के लिए। सर 686 हेट क्राइम्स हुए हैं पिछले वारदात, लेकिन उनमें से हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया इस मौजूदा सरकार ने। और किसके खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई? उनके खिलाफ जो विसल ब्लोअर हैं, उनके खिलाफ जो न्यूज देते हैं, सोशल मीडिया कहता है। मीडिया तो बिका हुआ, हम सब जानते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन और वही नहीं, हमारे ट्राइबल्स के खिलाफ उनकी जमीनें, उनकी फॉरेस्ट छीनी जा रही हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस दिए गए उनके। सर हमारे 2011 के सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से 12.2% मुसलमानों की आबादी है। और आपको जान के ताजुब होगा कि 54 मिनिस्ट्रीज में 11,131 ऑफिसर्स में मुसलमान सिर्फ 171 है, जिसका परसेंट 1.6 है। यहाँ हमको जो हमारे हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन अगर जेलों में आप तादाद देखेंगे तो मुसलमानों की तादाद 31 है, उसमें ज्यादातर इंडर ट्रायल है जिनको जबरदस्ती भरा गया है। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एक्टिविस्ट को इनको निकालना होगा। पिछले 10 सालों में हमने देखा, पहले राइट्स हुआ करते थे,
ये अब रैट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लोग बुला के भेजते हैं। और अब संभल में हमने देखा जब लोग नहीं मिल रहे तो प्रशासन ने गोली चलवाई। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं जानते कि ये कब समझेंगे कि संविधान सबके लिए है। ये संविधान हम सबके लिए बराबर है। सबसे अफसोस की बात है कि आर्टिकल 26, आर्टिकल 15 में हमें अपने जगहों का हमें इजाजत दे देता है, हमें अपने जो इदारे हैं उसको चलाने का इजाजत देता है। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके ये चाहते हैं कि बैकडोर से हमारी जमीनें छीन लें। हमारी जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारे पूर्वजों ने दान किया, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उसको वो छीनना चाहते हैं। और इनकी एजेंसीज बोलती है कि हम जहाँ चाहेंगे उसको वक्त मिल देंगे। आप जानते हैं सर, और मीटिंग में अभी जेपीसी चल रहा है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ पे नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है उनको? क्या योगदान है उनका? सर यही नहीं, सबसे अफसोस की बात यह होती है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। किशनगंज सर सबसे डिप्राइव्ड एरिया है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की जीडीपी $2600 है और 5% लोगों का अगर इनकम हटा देंगे तो हमारी जीडीपी है 1100 पर कैपिटा, सॉरी $1100, विच इज लोअर देन द सब सहारन डेजर्ट कंट्रीज। और वहां पे बिहार का लाया जाए तो $750 है। तो आप अंदाजा लगाइए। और उसमें भी सबसे पिछड़ा इलाका है जो किशनगंज और सीमांचल है। पिछले 12 साल से मैं गुहार लगा रहा हूं। आदरणीय मंत्री एजुकेशन जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पीछे बैठे हैं, पूछिए उनसे कितने दर्जनों बार हमने गुहार लगाई। जो यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने तोहफा दिया, आप उसमें अभी तक क्यों फंड नहीं दे रहे? धन्यवाद जी। क्यों कहते हैं कि हमारा अभिजीत गंगोपाध्याय जी, आप चाहते हैं कि सिर्फ हम मजदूरी करें? सदस्य अभिजीत गंगोपाध्याय जी, चाहते हैं कि हमें तालीम मिले? आप समाप्त कीजिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ग्रोथ में हमारा? अभिजीत गंगोपाध्याय जी। Honorable Speaker, आखिर में मैं I have decided. आखिर में एक लाइन बोल के आपसे इजाजत I have दूंगा। decided सर, to talk सर, in my mother एक लाइन tongue. बोलना चाहता हूँ। that is अरे Bengali. माइक दो यार, माइक नहीं है सर। सर आप कंटिन्यू करो। वो जलाते रहे हमारे आशियाने। सर वी आर टुगेदर इन जेपीसी। वो जलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। जय हिंद। धन्यवाद। Alfred are there? Not here. Please start. Mr. Chairman, sir, thank you. I am from a village in the far northeastern state of Manipur. My village is called Shangshak. In the spring of 1944, when the Great Second War reached that part of the country, my village was where the Battle of Shangshak took place for a week. Hundreds and hundreds of Allied forces as well as Japanese forces, they lost their lives there. It was the Battle of Shangshak that ensured that the Allied forces could reach Kohima in time so that the onslaught of the Japanese could be stopped. Sir, the nation was built 1950, as we all know, the Constitution was adopted, enacted. That part of the country, we never knew what was being discussed. Our people never ever knew what was happening in these great halls, what our founding fathers were discussing for the welfare and the future of that part of the country. Many amendments were required. One such amendment that happened in '63 was Article 371A for the state of Nagaland. In 1971, Article 371C for the state of Manipur. It was because at the time in 1949, when the Constituent Assembly discussed the Constitution, many parts of our nation were left out. Our nation is a plural nation.
That is the belief that we had grown up with. We have studied our whole lives that this nation is a nation that constitutes pluralism. The core and identity of our nation is the plurality that this nation exudes so proudly. Why is it today? I have seen many eloquent speakers. I am grateful across both sides of this house. You have spoken on the Constitution. Where was the Constitution on the 4th of December 2021 when my armed forces, special forces of the 21 Special Force Paras, they killed 6 civilians who had gone to work in coal mines, coming back home to their families. Because you had cut down the budget for Narega, they did not have a source of income that they had to go and work in the coal mines on the way back. The best of our forces, the 21 SF, they mowed down 6 unarmed civilians. Yet, in the aftermath of that, another 8 more civilians were killed in Nagaland, in Oting. What did this government do at that point in time? This country should hang its head in shame. Why? Because you, yes, to assuage the villagers of Oting, you nominated a very good friend of mine as the Rajya Sabha MP from Nagaland. Presently, she's the MP representing Nagaland, and her name is Phangnon Konyak, a well-deserved lady from Oting. Is that enough for the families that have lost their lives to my armed forces? Did not this nation and this people and this house at least stand up in unison, condemning that? At least I expected our Raksha Mantri to have stood up and said that we owe responsibility to whatever wrong happens, and it is our own people that we have assassinated, and for that we mourn. Till date, that is missing. Are we not a part of this nation? I ask you, Speaker Sir. Mr. Chairman, 3rd of May, 2023, I need not remind this House or this nation what happened in my state of Manipur. What has been happening for the last 19 months? The last time I got to speak in this August House, I very clearly said, as a citizen of this nation and as a family that has contributed in building this nation, it is my right to ask for justice. Why is it till today that my Prime Minister, someone who this nation believes, someone who I also wish to believe, why is it that till date he is not answerable to the people of Manipur? Why? Is it too much? Is it too much for me to ask on behalf of those civilians that have elected me here today? Sir, Mr. Chairman, sir, those children, those women across communities, they have lost their lives. They cannot be victimized for a cause for which this nation or the state cannot handle. Is my nation so weak that you cannot protect the lives and property of the civilians there in Manipur, sir? I beseech the conscience of this House. Thank you. We have so many eloquent speakers, sir. I'm closing. Sir, I'm closing. Please, please. Sir, in the end, I wish to beseech upon the conscience of this House, especially all the honorable members of the ruling bench. This is not a war against either party, be the treasury or the opposition. This is a war against humanity in this country. Please, wake up, speak to your people. All you have to do is see how difficult is it for our nation, which is growing and going to become the 3rd largest economy. You talk only of economy, but when you have finished of people, what will that economy do when there are no people to use it? I ask the conscience of this House and the leadership of this nation, please today stand up, be with your brothers and sisters in Manipur, bring about justice and be accountable for all actions. Thank you, Speaker. Hey, Suresh. Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to speak on the historic debate, 75th anniversary of Indian Constitution. Today, as we stand here,
under the bright light of our democracy, we must remind ourselves of the values enshrined, our guiding document, our moral compass, and the foundation of our republic. The Constitution of India, crafted under the vision of Dr. B.R. Ambedkar and Constituent Assembly, reflects our nation's commitment to justice, liberty, equality, and fraternity. It gave us the framework for a sovereign, socialist, secular, and democratic republic. It is the sacred document that binds us together as one nation, one people with a dignity for all. The Indian National Congress has been the torchbearer of constitutional values since independence. When the Constitution was adopted in 1950, it was the Congress leadership that ensured every citizen, irrespective of caste, creed, or religion, was treated as equal before the law. It was under Congress leadership that India became a global example of unity and diversity. We have fought tirelessly to uphold fundamental rights and expand opportunities for all, be it through social justice, education, or economic reforms. For decades, the Congress Party has stood firm against authoritarianism, ensuring freedom of expression. For the protection of the rights of minorities, women, and marginalized communities. For strengthening institutions like Parliament, the Judiciary, and Election Commission to safeguard democracy. Chairman, sir, it is in the Congress that brought the nation right to information, right to education, and Mahatma Gandhi Narega, empowering the people and making the state accountable. But, honorable members, in the last 10 years, under the BJP rule, we have witnessed a systematic and unprecedented attack on the Constitution. The very ideals for which our forefathers fought are being trampled upon. The BJP has centralized power, sidelining states, and violating the principles of cooperative federalism, whether it's GST implementation or fund allocation. They have disrespect state governments, weakening the federal structure. Honorable Chairman, sir, freedom of speech has been silenced. Journalists, activists, and ordinary citizens face threats, arrest, and harassment. Laws like UAPA and sedition charges have been misused to suppress dissent. A right to equality is being replaced with majoritarian politics, religious divisions, and deliberately deepened, and the secular fabric of India is torn apart. The pillars of our democracy, Parliament, Judiciary, CBI, ED, and Election Commission are being compromised. Independent voices are being stifled, while institutions are being weaponized to target opposition parties and critics. Honorable Chairman, sir, the BJP rule has widened the gap between the rich and poor. Crores are spent on vanity projects while youth unemployment and inflation crush the dreams of millions. They have failed to uphold directive principle that call for equitable distribution of wealth and opportunities. Policies that marginalize Dalits, tribals, and backward classes are pushing us backward. Reservation and welfare schemes face constant threat, while historical injustices are being ignored. Upholding constitutional morality, the Congress Party is here to restore hope, dignity, and the constitutional spirit of India we committed
restoring the freedom of speech and protecting the media from intimidation, ensuring economic justice by addressing unemployment, inflation, and social equality, defending the rights of minorities, women, Dalits, and marginalized communities, ensuring that India's diversity is celebrated, not threatened, strengthening institutions to make them truly independent, ensuring democracy function as intended. The battle for the soul of India, the BJP politics of division, authoritarianism, and disregard for the Constitution cannot continue unchecked. As a citizen of India, we must rise to protect our democracy. Honorable Chairman, sir, let us pledge to fight for an Indian where every citizen has equal right, every voice is heard, and every dream is nurtured. The Congress Party stands by the Constitution, and we will not allow anyone to dismantle its ideals. Thank you, Chairman. Very good. Thank you. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on the constitutional debate. At the outset, I would like to pay tribute to Annal Ambedkar and other Constituent Assembly members for their remarkable contribution, laying a strong foundation to India as the world's largest democracy. I would like to specially mention our Honorable First Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, for his commitment and conviction to the democratic values enshrined in the Constitution. Without him as the first Prime Minister for 17 long years, our history may have taken a different turn. That's why you are afraid of him. Taromat. You profess so much about the Constitution. In reality, you are totally against it. The Constitution promotes fraternity among all citizens. You are spreading hate and divisiveness. The Constitution assures the dignity of all individuals. You are stripping people of their dignity. The Constitution promotes unity among people. You are creating a divide. The Constitution envisages liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. You are stifling dissent and oppressing minorities. The Constitution provides equal rights to women. But are we getting our due? I don't want to politicize rape or any crime against women. They are rooted in a patriarchal society. Every woman in this country believes that the rule of law will protect her and punish the guilty. That is where your government has failed. From Kathuwa, Unnao, and Hathras to the women wrestler protest, the rule of law faltered for women and shielded the guilty of their heinous crimes. Shame. You brazenly protected the likes of Guldeep Singh Sengar, Brijbhushan Singh, then Shame. BJP MLA and MP, Shame. and garlanded Bilkis Paul's Shame. convicts. The Shame. PM cannot look Manipur women in their eye for their suffering under his inaction. Shame. Now you claim that you are protecting the Constitution. Irony just died 1,000 deaths. It is very shameful that minority, especially Muslims in our country, are required to hide their identities. As for religious bigotry, which has nothing to do with the religion of Hindu, the BJP ruling states is bulldozing their houses, staking claim to their places of worship, and deleting their history from textbooks. It has brought in the law like the Bok Bill and CAA NRC. You bunch numbers around Muslim fraternity lads and spread lies through WhatsApp University. The BJP, the Prime Minister himself made inflammatory speeches against the community just a few months ago. The India Hate Lake report noted that 75% of the hate speeches in India 2023 took place in BJP ruling states. During the election, in many places, Muslims across the country were stopped from exercising their constitutional right to vote. This is a clear attack on the Constitution. You will say Congress party is appeasing minority. Unlike you, we speak for every community. When we are defending a woman, Dalit, minority, farmers against the injustice, we are fiercely defending the Indian Constitution because Constitution treats everybody equal. You have always hit federalism with the hammer of hegemony. For every 1 rupee we pay the union government, we only get 25 paise in return. My state has been deprived of funds for the PM Shri scheme because we refuse to allow Hindi imposition through the NEP. We are not against children learning Hindi. They are free to do it by choice. What we are against is an imposition. Every time we ask the government funds, BJP government, they send the ED after us instead. Tamil Nadu has repeatedly been left to fend for them itself in the face of natural disaster. Even the office of governor is being used as a pawn to stifle federalism. Shame. Is it not attack on the Constitution? Plurality is the beautiful soul of India. It has been sacrificed at the altar of BJP's one nation, one party, one leader. Remember that even the strongest empires have fallen at the will of the people, and it will happen once again. Thank you. Excellent. Thank you.